बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर्स में हम वलय के प्रारंभिक त्रिगुण देखेंगे और इसके लिए समाकारिता और तुल्यकारिता का अध्ययन करेंगे। टुडे वी विल स्टडी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग एंड रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म्स। तो त्रिगुण में सबसे पहले हम देखते हैं कैंसिलेशन लॉस इन ए रिंग। एक वलय में निरसन नियम, वलय में निरसन नियम। We can say that cancellation laws holds in a ring are laws holds in a ring R if एक वलय R में निरसन नियम का पालन होता है यदि A is not equals to 0 and A into B equal A into C implies B equal C, where A, B, C are members of R and A is not equals to 0 and AB equal AC। अब हम यहाँ राइट कैंसलेशन बताएंगे तो AB एंड AC हम पहले ले चुके हैं, तो ये हम बताएंगे कि BA equals CA implies B equals C where ABC are in R। So first is called left cancellation law whereas second is called right cancellation law। पहले को हम कहते हैं वाम निरसन नियम और दूसरे को कहते हैं दक्षिण निरसन नियम। तो एक वलय में इन नियमों का पालन होता है यदि ये दोनों कंडीशंस फॉलो होती हैं। तो इस पर छोटा सा रिजल्ट देखते हैं। चलो रिंग R is without zero divisors if and only if cancellation laws holds in R। R शून्य भाजक रहित वलय होता है, मतलब R में शून्य भाजक नहीं होते हैं यदि और केवल यदि R में निरसन नियम का पालन होता है। सो फर्स्ट सपोज दैट R has no divisors of zero। पिछले लेक्चर्स में हमने जीरो डिवाइस के बारे में पढ़ा था, उनके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट्स इज जीरो देन रिंग आर इज सेड टू बी रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। तो यहाँ से हमने, चूँकि ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, इसमें शून्य भाजक नहीं है, तो यहाँ अशून्य अवयव का गुणनफल अशून्य होगा। सो लेट A, B, C be any three members of R such that A is not equals to 0 and AB equal AC। मतलब A, B, C तीन मेंबर्स हैं R के जहाँ कि A शून्य नहीं है और AB इक्वल AC है। तो चूँकि हम शून्य भाजक नहीं है R में, अतः इसकी सहायता से हम दिखाएंगे कि यदि शून्य भाजक नहीं है तो कैंसलेशन लॉ होगा। तो यहाँ हम दिखाएंगे कैंसलेशन लॉ फॉलो होता है। सो AB इक्वल AC implies AB minus AC equal 0। This implies A into B minus C equal 0। Since R has no divisors of 0, since R has
no divisors of 0 and a is non-zero, therefore b minus c must be 0, implies b equal c. Thus a is non-zero and ab equal ac implies b equals c. So this implies left cancellation law left cancellation law hold in R. Similarly, we can show that right cancellation law also holds in R. Now conversely, suppose that cancellation laws होल्ड इन आर, मतलब हमने माना कि आर में नेल्सन नियम का पालन होता है तथा एंड लेट ए इंटू बी इक्वल 0 वेयर ए इज नॉन जीरो एंड आल्सो बी इज नॉन जीरो. नाउ अब हमें इससे ये दिखाना होगा कि कैंसिलेशन वाला यदि होल्ड करता है तो रेसिप्रोकली में दिखाना पड़ेगा ये कि इसमें शून्य भाजक नहीं होते हैं. तो नाउ सपोज a is not equal to 0 and ab equals 0 implies a into b equal a into 0. So this implies by left cancellation b equals 0 by left cancellation law. Okay, so thus we get a contradiction. ये हमारा विरोधाभास मिला. इसलिए विरोधाभास मिला क्योंकि b is not equals to 0 because b is not equals to 0. Similarly, ab equals 0 and b is not equals to 0 implies a equals 0, which also contradicts that a is not equals to 0. जैसे हमने देखा ना ab equals 0, so this is 0 into b and by right cancellation a equals 0. तो ये contradiction फिर से मिला. So hence R is a ring without 0 divisors. R has no divisors of 0. Now come to another property. In form of theorem कि in a ring R with binary operation addition and ordinary addition and multiplication, first a into 0 equals 0 into a equals 0 for all a belongs to R. And just see its proof. A into 0 को we may write a into 0 plus 0 because 0 is additive identity of R. तो 0 को लिख सकते हैं 0 plus 0. So this implies a into 0 plus 0 equal a into 0 plus a into 0. So again 0 is the additive identity and left distributive law, बाएं बंटन नियम से.
So this implies 0 equal a into 0. So by left cancellation law, अभी ऊपर हमने थ्योरम देखी थी, thus a into 0 equals 0. Similarly, we can show that 0 into a equals 0. Okay, so this completes the proof that a into 0 equals 0 into a equals 0. Second, a into minus b equal minus a into b equal minus half a into b for all a, b in R. A into minus b equal b minus a into b equal minus half a b. सभी a b belongs to R के लिए. तो just see its proof कि minus b plus b equals 0 for all b in R. चूँकि माइनस बी की एडिटिव आइडेंटिटी b है, इसी प्रकार b का माइनस बी के लिए एडिटिव इनवर्स माइनस माइनस बी है, या कह सकते हैं b का एडिटिव इनवर्स माइनस बी है. सो माइनस बी प्लस बी इक्वल 0. सो दिस इम्प्लाइज a इंटू माइनस बी प्लस बी इक्वल a इंटू 0. बाएं तरफ से कंपोजिशन लिया a के साथ. सो दिस इम्प्लाइज a इंटू माइनस बी प्लस a इंटू बी इक्वल 0, बिकॉज a इंटू 0 इक्वल 0 हमने फर्स्ट से प्रूफ किया था बाई फर्स्ट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय बंटन नियम से. सो दिस इम्प्लाइज a इंटू माइनस बी प्लस ए बी, दोनों तरफ एक कंपोजिशन लेने पर कि हम माइनस ऑफ ए बी ऐड कर देते हैं दोनों साइड टुवर्ड्स द राइट. सो 0 प्लस माइनस ऑफ ए बी. दिस इम्प्लाइज बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज बी में राइट ए बी प्लस ऑफ minus AB equal, as 0 is additive identity, so it becomes here minus of AB. Here element is AB and minus AB is the additive inverse of AB, so therefore it becomes 0 equal minus of AB. Therefore A into minus B equal minus of AB. Similarly, we can show that minus a into b equal minus half ab. Thus, a into minus b equal minus half a into b equal minus half ab. Third one is minus a into minus b equal a into b for all a, b in R. Proof is very simple. By second, minus of a into minus of b equal minus of a into b by second. अभी हमने प्रूफ किया था. So this is minus half a into minus b is again minus half ab. This is again by second, so it is ab. Now come to one more property. B minus c into a equal b into a minus c into a for all a, b, c in R. So b minus c, just see, proof is very simple. B minus c into a, b may write b plus minus c whole multiplied by a. So this is b into a plus minus c into a by right distributive law. So
So this is B into A and this is minus C into A by second, जो हमने प्रूफ किया था अभी. So B minus C, thus B minus C into A equal B into A minus C into A. Similarly, A into B minus C equal A into B minus A into C. एग्जाम्पल्स हमने रिंग के देख ही लिए थे पिछले लेक्चर्स में. हम आते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म. रिंग होमोमॉर्फिज्म, आपने जैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही रिंग होमोमॉर्फिज्म है. अंतर ये है ग्रुप की जगह रिंग हो जाता है कि लेट आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड आर डैश अनदर रिंग विद एडिशन डैश. हमने थोड़ा दोनों में डिफरेंस रखने के लिए हमने डैश लगा दिए, प्लस डैश and dot dash are two links. Then a mapping F from R to R dash is said to be a homomorphism if number one, f of a plus b equal f of a plus dash f of b and f of a into b equal f a into dash f b. चूँकि a and b रिंग के एलिमेंट्स हैं आर के और इसमें ऑपरेशन एडिशन है, प्लस है, तो इसलिए हमने इसके बीच में ऑपरेशन लिया प्लस, ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन लिया. जबकि एफ ए और एफ बी, चूँकि ए और बी की इमेज हैं, ये मेंबर्स हैं आर डैश की, इसलिए हमने यहाँ ऑपरेशन लिया प्लस डैश एंड डॉट डैश. दिस होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड जनरली दिस होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड इनटू होमोमॉर्फिज्म. एंड इफ द फंक्शन एफ इज ऑन टू, then homomorphism is said to be onto homomorphism and R dash is called homomorphic image of R if F is also onto. Now come to ring isomorphism. Ring isomorphism. F such that R to R dash is said to be a ring isomorphism if number one, it is an homomorphism, that is f of a plus b equal f a plus dash fb and f of a into b equal fa into dash fb. Second, f is 1 1 and third f is on 2. यदि होमोमॉर्फिज्म जो है वह 1 1 on 2 भी है, then f is said to be an isomorphism. ओके, ऑपरेशंस वही हैं. आर इज ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड डॉट और मल्टीप्लिकेशन इनटू, एंड आर डैश है प्लस डैश और डॉट डैश के साथ ऑपरेशन है. एंड वी राइट सिंबलिकली वी राइट आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश. ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हम लेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म के एग्जांपल हम जो देना चाहेंगे. सो
आपने पहले भी पढ़ा है कि लेट M is a set of all square matrices of order to x such that x equal like x by minus by x, where x by belongs to R. Okay, and C is a set of complex numbers alpha plus minus I beta such that alpha beta are real numbers and I is root of -1. आयोटा जो है I रूट ऑफ -1 है। तो यह है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चूंकि यहाँ प्लस माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दे ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। सो द मैपिंग F, एक फलन परिभाषित करते हैं F फ्रॉम C to M given by f of x plus I by equal matrix x by minus x minus by and x। तो ये चूँकि आप जानते हैं कि सेट ऑफ मैट्रिसेस रिंग है। ओके, सेकंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो फॉर्म ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं इट इज़ f इज़ 1 1 एंड ऑन 2। तो और होमोमॉर्फिज्म भी आप आसानी से इसको दिखा सकते हैं। सो दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग C to another ring M। Now some properties of isomorphism, or you can say some simple theorems on isomorphism. So if f from R onto R dash is a homomorphism, then number 1 f0 equal 0 dash, where 0 and 0 dash are the additive identities of R and R dash respectively। 0 एडिटिव आइडेंटिटी R का है और 0 डैश जो है R डैश का योगात्मक तत्समक है। एंड सेकंड f ऑफ माइनस a इक्वल माइनस ऑफ एफ ए फॉर ऑल a belongs to R। Now come to proof of 1। Let A belongs to R be an arbitrary element then चूंकि A R का मेंबर है and F is a mapping from R to R dash, then FA belongs to R dash। okay, 0 dash is the additive identity of R dash, therefore FA plus 0 dash इक्वल FA। चूँकि FA मेंबर है R dash का और 0 dash R dash का आइडेंटिटी है, सो दिस इम्प्लाइज FA plus 0 dash इक्वल FA plus 0, because for all A in R और 0 आइडेंटिटी है R का, इसलिए A plus 0 इक्वल A। सो दिस इम्प्लाइज FA plus 0 dash equal FA
प्लस F0, F चूँकि होमोमॉर्फिज्म है, ओके, दिस इम्प्लाइज 0 डैश इक्वल F0 बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ इन आर डैश। चूँकि आर डैश रिंग है इसलिए इसमें भी नियरेस्ट नेम का पालन होगा। दस F0 इक्वल 0 डैश। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट हुआ। सेकंड हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ माइनस ए इक्वल माइनस एफ ए। चूँकि हमने देखा अभी कि F0 इक्वल 0 डैश और 0 में चूँकि माइनस ए प्लस ए इक्वल 0 है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ हम 0 को लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए इक्वल 0 डैश। सो चूँकि एफ होमोमॉर्फिज्म है सो इट विल बी एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ए इक्वल 0 डैश। चूँकि अब हमें दिखाना है कि एफ ऑफ माइनस ए इक्वल एफ ए, तो यहाँ हम दोनों साइड्स में माइनस ऑफ एफ ए से कंपोजिशन लें। सो 0 डैश प्लस माइनस ऑफ एफ ए। सो बाई associative property in a ring R, we may write f of minus a plus f a plus of minus f a equal minus of f a, as 0 dash is the identity of 0 dash is the identity of R dash. In fact, it is additive identity, and here by associativity. So this implies f of minus a plus 0, because f a is the additive inverse of minus of f a। यह कह सकते हैं minus of f a is the additive inverse of f a, so this is 0 dash। चूँकि एफ ए और माइनस एफ ए ये एलिमेंट्स हैं आर डैश के, इसलिए हम आइडेंटिटी लेंगे 0 डैश इक्वल माइनस ऑफ एफ ए। चूँकि 0 डैश आइडेंटिटी है रिंग आर डैश का और एफ ऑफ माइनस ए रिंग आर डैश का मेंबर है, सो इट विल बी एफ ऑफ माइनस ए इक्वल माइनस ऑफ एफ ए। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी। And now come to another property in the form of theorem. Ably homomorphic image of a commutative ring is a commutative ring। मतलब प्रत्येक कमिन्वय वलय के समाकली प्रतिबिंब भी कमिन्वय वलय होता है। प्रत्येक कमिन्वय वलय का समाकली प्रतिबिंब कमिन्वय होता है। In other words, if f is a function from R to R dash is a ring homomorphism मान लीजिए f R से R dash में वलय समाकारिता है एंड तथा R जो है कमिन्वय वलय है। R इज ए commutative ring, then R dash is a commutative R dash is a commutative
रिंग। तो यहाँ इन्होंने चूँकि होमोमॉर्फिक इमेज कहा है, इसलिए हम इसे यहाँ ऑन टू मैपिंग ले लेते हैं ना। सो वैसे ऑन टू नहीं है तब भी ये चलेगा, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं अभी। ओके, तो प्रूफ चूँकि होमोमॉर्फिक इमेज कहा है, इन केस यदि ऑन टू है तो आर डैश मस्ट बी इक्वल्स टू एफ आर। तो let A and B are any two elements are and of R, okay, and A dash B dash are any two elements of R dash such that FA equal A dash and FB equal B dash. Now we have to show that कि homomorphic image of a commutative ring is commutative। तो यदि R commutative है तो FR homomorphic image ये भी commutative होगी। तो हम यहाँ मान लेते हैं R is a commutative ring। So now f of A into B के पहले हम इसे लिखें कि चूँकि हमें आर डैश को कम्यूटेटिव दिखाना है, इसलिए हम आर डैश के मेंबर्स लेके चलते हैं। सो नाउ ए डैश इंटू बी डैश, यदि हम इसको दिखा सके इट इज़ बी डैश इक्वल ए डैश, मतलब ए डैश इक्वल बी डैश इक्वल है बी डैश इक्वल ए डैश के, तब आर डैश आपका जो है वो कम्यूटेटिव होगा। सो ओके, ए डैश इंटू बी डैश इक्वल एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। चूँकि आर डैश में हम कॉम्पोजिशन इंटू डैश लेते हैं जनरली कि हम आर प्लस एंड मल्टीप्लाइकेशन एक रिंग है एंड आर डैश प्लस डैश इंटू डैश दूसरा रिंग है। सो इन दैट केस हम यहाँ इंटू डैश लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज ए डैश इंटू बी डैश इक्वल, चूँकि एफ जो है समाकारिता है, सो एफ ए इंटू डैश एफ बी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू बी, बिकॉज एफ प्रिजर्व्स द कंपोजिशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इन आर। सो एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म इन आर है। सो दिस इम्प्लाइज ए डैश इंटू बी डैश इक्वल एफ ऑफ बी इंटू ए, सिंस आर इज कम्यूटेटिव रिंग, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। देखिए फिर से हम इसको पढ़ते हैं, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। सो ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, सो दिस इम्प्लाइज ए डैश इंटू बी डैश इक्वल एफ बी इंटू एफ ए, बिकॉज एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर इंटू आर डैश। तो एफ बी को लिख सकते हैं एफ बी इंटू एफ ए। अगेन आपका एफ बी है बी डैश इक्वल, सो दिस इज बी डैश इंटू एफ इक्वल है ए डैश के। सो दिस देयरफॉर आर डैश इज कम्यूटेटिव, आर डैश इज ए कम्यूटेटिव रिंग। ये हमें प्रूफ करना था कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज आल्सो कम्यूटेटिव। एक हम प्रॉपर्टी और देखेंगे अभी इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम कि if f be a onto homomorphism from ring R addition multiplication to a ring R dash addition dash multiplication dash, दैट इज, अब चूंकि होमोमॉर्फिक इमेज है इसका मतलब ये हुआ कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, सो दैट इज एफ आर मस्ट बी इक्वल्स टू एफ आर डैश एंड वन डैश आर
respectively unity element of the ring R and Rs, then number 1 F1 equal 1 dash, तो इसमें हम दिखाएंगे कि F1 जो है 1 डैश के इक्वल होगा। यदि मान लीजिए आर डैश में इनवर्स मतलब यूनिट एलिमेंट है तो रिंग में से यूनिट एलिमेंट हम कह सकते हैं। एंड सेकंड एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल एफ ए होल इनवर्स फॉर ऑल invertible elements A belongs to R। इन्वर्टिबल कब होगा? जब वो नॉन जीरो होगा। सो और एग्जिस्ट करता है वहाँ। सो लेट प्रूफ ऑफ 1, let A dash belongs to R dash be an arbitrary element। so चूँकि ये onto homomorphism है, F is onto, therefore there exists an element A dash belongs to R dash such that F of A equal A dash। now F of 1 इक्वल 1 डैश दिखाना है, तो F of 1 एलिमेंट है R डैश का, जिसका कंपोजिशन हम लेते हैं इनटू डैश A डैश के साथ। सो दिस इज F1 इनटू डैश FA, चूँकि FA इक्वल A डैश है। सो दिस इज F1 इनटू A, चूँकि F होमोमॉर्फिज्म है। Okay, so this is FA because 1 is the unit element of A। So for all A belongs to R, 1 into A equal FA। So FA equal A dash। Okay, so this implies F of 1 into dash A equal 1 into A dash। या इसको हम छोड़ते हैं भी, हम दूसरे तरीके से इसको दिखाएंगे। ओके, तो 10 F1 into dash A dash equal A dash। Similarly, we can show A dash into dash F1 equal A dash। Therefore, F1 into dash A dash equal A dash equal A dash into dash F1 for all A dash in R dash। This implies F1 is the unity element of R dash। that is हमने पहले ही माना था कि जो 1 dash है वो थोड़ा में दिया है कि 1 dash is the unit element of R dash। so that is F1 equal 1 dash। it completes the proof। now come to proof of second। so let A is any non-zero element of R। हम लोग को दिखाना है F of A inverse equal FA whole inverse। so
this is non-zero element of R, so there exists A inverse in R such that, मान लीजिए एक ऐसा एलिमेंट है नॉन जीरो एलिमेंट आर का कि यहाँ इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है आर में। सभी के लिए आवश्यक नहीं है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ए के लिए हमने लिया। सो सच दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स इंटू ए इक्वल 1। अगेन let 0 dash is not equals to fa belongs to R dash. Now A into A inverse equal A inverse into A equal 1. So this implies f of A inverse equal f of A inverse A equal f of 1. f composition लिया simultaneous equation A inverse equal 1 में। सो चूँकि f homomorphism है, so we may write fa composition dash fa inverse equal f of A inverse composition dash fa equal f1। तो यहाँ दिस शोज कि इनके हमें कंपोजिशन चूँकि f1 मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है आर डैश का, चाहे लेफ्ट से हम कंपोजिशन लें या एफ ए के राइट से लें एफ ए इनवर्स के द्वारा। देयरफॉर एफ ए इनवर्स इक्वल एफ ऑफ ए इनवर्स, दैट इज एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ए फॉर ऑल इनवर्टिबल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ऐसे सभी इनवर्टिबल एलिमेंट, ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनका प्रतिलोम ए में है। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी। सो ओके, थैंक यू।